Hello everyone, welcome you all. In last lecture we learned public revenue. Now today we are going to learn third type, that is public debt. Public debt. What is public debt? Is an important source of resources for a government to finance public spending and fill holes in the budget. Means public debt as a percentage of GDP, that is gross domestic product, is usually used as an indicator of the ability of a government to meet its future obligations. The table uh, which is shown here, that is uh, internal. There are two types of public debt: internal and external debt. Like a private individual, the government also needs to raise loans, right? In fact, raising debt is the most common activity of any government, because government's expenditure generally exceeds government revenue. Public debt policy of the government plays an important role in public finance. जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे लोन की जरूरत होती है ना? वैसे ही गवर्नमेंट को भी लोन की जरूरत होती है, लोन रेज करने पड़ते हैं। कुछ कॉमन एक्टिविटी करने के लिए, या तो जो भी एक्टिविटीज है, तो जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमें देते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट का मतलब जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से ज्यादा होता है। जो भी रेवेन्यू है, पब्लिक रेवेन्यू जो है, वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है। इसलिए गवर्नमेंट को भी डेट लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इंडिविजुअल पे हम लेते हैं तो गवर्नमेंट को भी जरूरत होती है, राइट? सी हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट: internal and external. What is internal? When a government borrows from its citizens, banks, central banks, financial institutions, business, houses, etc. within the country, it is known as internal debt. मतलब जैसे कि गवर्नमेंट जब सिटीजन से या तो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिस इनसे लोन लेता है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल डेट. What is external debt? When a government borrows from foreign government bank, foreign governments, so foreign banks or institutions, international organizations like International Monetary Fund, World Bank. So it is known as external debt. मतलब गवर्नमेंट जब फॉरेन बैंक से या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कुछ भी लोन लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल. मतलब इंटरनल में क्या है, जो सिटीजन्स है, बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे जब गवर्नमेंट लोन लेता है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल डेट. एंड अगर फॉरेन गवर्नमेंट से या तो फॉरेन बैंक से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर गवर्नमेंट लोन ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी. सी, फर्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकेंड है पब्लिक रेवेन्यू, थर्ड है पब्लिक डेट, एंड फोर्थ है फिस्कल पॉलिसी. Okay, what is fiscal policy? Fiscal policy is the means by which a government adjusts its spending level and tax rates to monitor and influence a nation's economy. Means fiscal policy नेशंस इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए या तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग लेवल और टैक्स रेट्स में चेंजेस करती है. तो दैट इज फिस्कल पॉलिसी. मतलब जो पॉलिसी यहाँ पे यूज होती है,
कि जो टैक्स रेट है या तो स्पेंडिंग की जो लेवल है उसमें उसके ऊपर मॉनिटर करने की या तो उसमें चेंजेस करने के लिए जो पॉलिसी यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. Okay, it deals with the public expenditure, public revenue and public debt. Means ये पॉलिसी जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू से संबंधित है, उससे रिलेटेड है. किसे? पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड है. ओके. What is the main goal of this policy? The main goal of fiscal policy are to achieve and maintain full employment, reach a high rate of economic growth, and to keep prices and wages stable. But fiscal policy is also used to curtail inflation, then increase aggregate demand and other macroeconomic issues. Okay. Then fiscal policy is an important tool for managing the economy because its ability to affect the total amount of output produced. That is gross domestic product है ना. The first, what is the first impact of this fiscal expansion is to raise the demand for goods and services. जो भी goods and services है उसकी डिमांड को रेज का करने के लिए ये फिस्कल पॉलिसी एक्सपांशन होना जरूरी है. ओके, तो दैट इज फिस्कल पॉलिसी. नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, next point is financial administration. As the name suggests, this area of public finance is all about the administration of all public revenue, that is public all public finance, that is public income, public expenditure, public debt. Okay, then financial administration includes preparation, passing and implementation of government budget and various government policies. मतलब जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो भी गवर्नमेंट का बजट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका प्रिपरेशन करना, ये सब काम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है. Okay. In general terms, financial administration implies administration relating to the management of collecting revenues and expenditure for running the public administration. Means both the income and expenditure are guided by plans or certain definite rules and regulation. Means financial administration means क्या कि गवर्नमेंट को जो इनकम एक्सपेंडिचर है और जो डेट है तो वो परफेक्ट हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी परफेक्ट होना चाहिए. तो दैट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. और कंट्री की जो ग्रोथ है, कंट्री की ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट का जो बजट है, कंट्री की ग्रोथ करने के लिए जो गवर्नमेंट का बजट है उसका प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होता है. ठीक है, मतलब कंट्री की जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करता है, जो भी एक्सपेंडिचर करता है, ये सब काम, मतलब डेट है, पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये सबका सब किसमें इंक्लूड है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब पॉइंट्स इंक्लूड है. ओके, इन दिस चैप्टर व्हाट वी learn the structure of public finance. The structure of public finance. What is public expenditure? Okay. In public expenditure, we learn what are the reasons for growth the public expenditure, like increase in the activities of the government, then rapid increase in population, then growing urbanization, increasing defense expenditure. मतलब
ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कैसे ग्रो होता है, कैसे उसमें इंक्रीज हो, क्यों हो रहा है, तो इसके सब रीजंस जो है वो हमने इस चैप्टर में लर्न किए। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे ग्रो होता है, तो ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर में हमने लर्न किए। देन सेकंड पॉइंट है पब्लिक रेवेन्यू। In public revenue, we learn the sources of public revenue. That there are two sources of public revenue: tax and non-tax revenue. Okay, tax and non-tax revenue. In tax, there are two types of taxes: direct tax and indirect tax. Okay, there are two types of tax: direct tax and indirect tax. In direct tax, we discuss on income tax, then securities transaction tax, then capital gains tax. This tax we discuss in direct tax. Then in indirect taxes we discuss on GST, VAT, custom duty. Okay, we learn in this tax. Then second type of public revenue, that is non-tax revenue. Non-tax revenue. We learned a brief information about the sources, that is fees, donation, fines, penalties, grants, then special assessment, gifts, special levies, and borrowings, prices of goods and services. These points we learned in this non-tax revenue. Okay, it is very important, the structure of public finance. See, there are five points here: public expenditure, public revenue, public debt, and fiscal policy and financial administration. Then third, public debt. In public debt, there are two types: internal debt and external debt. Then fiscal policy. What is fiscal policy? What is, why it is important in public finance, we learn in this chapter. And then financial administration. All these 5 points, that is public expenditure, public revenue, public debt, and fiscal policy, are included in financial administration. जो भी पब्लिक का एक्सपेंडिचर है, जो भी रेवेन्यू है, डेट है, ये सब किसमें आता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उसका हमने लर्न किया. ठीक है. ओके, नाउ दिस चैप्टर complete here. Some next part is omitted.